Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Start with the greatest name of Allah, who is most kind and most merciful. Today I am going to start a series of lecture on literature. So it would be my first lecture on literature. We will learn about literature, what is literature, how emerge literature, why literature is necessary, and writer of literature, and what's one and other important topics like poetry, drama, and other terms related to literature. First of all, I discuss what is literature. If we talk about the definitions of literature, we can find multiple definitions of literature. Like literature is the mirror of society, or literature is the reflection of society, and books and writings published on a particular subject is called literature. Literature is the preserved writing. Literature is the body of written works. These are some popular definitions of literature. There is no specific definition of literature. It's depend upon everyone's thoughts, perception, and its ability, how a person thinks about society, and how he see our environment. Literature अदब जेको असां मतिलबु कंहिं शइ जे बारे में पढ़ूं जेको असांखे कंहिं किताबनि में लिखियल फॉर्म में मिले या प्रिंटेड फॉर्म में मिले, जेको असांखे कंहिं न कंहिं सोसाइटी में कंहिं न कंहिं हिस्ट्री जे बारे में ॿुधाए, असां उनखे लिटरेचर चवंदासीं। पर पंहिंजो फोकस इंग्लिश लिटरेचर ते आहे, जेको तमामु दुनिया मां वॾे मां वॾो लिटरेचर जेको कंसिडर्ड कयो वेंदो आहे, उहो इंग्लिश लिटरेचर ई आहे। लिटरेचर उहो ई आहे त जेको असांजी सोसाइटीज़ में जेके इवेंट्स थींदा आहिनि या जेके पास्ट में जेके इवेंट्स थी गुज़रिया आहिनि, उन्हनि जो हिकिड़ो रिफ्लेक्शन आहे। ऐं इन्हनि सां गॾु जेको राइटर थी गुज़रिया आहिनि, उन्हनि सोसाइटी ते कीअं लिखियो आहे, सोसाइटी में कहिड़ा जेके आहिनि इविल वर्क थिया आहिनि या जेके एडवांटेजिस बि थिया आहिनि, न सभिनी खे जेको असां पढ़ूं था या राइटर उनखे राइटिंग में महफ़ूज़ कयो आहे, उहो असां लिटरेचर में पढ़ूं था। लिटरेचर जेको आहे तमामु हिकिड़ो डीप लफ़्ज़ आहे, जेको हिकिड़ी डेफिनेशन ते बेस नथो करे। लिटरेचर तमामु डीप आहे, इन खे जेतिरो असीं खोजना कंदासीं त इन जी एतिरी असांखे मतिलबु इन जी गहराई में वेंदासीं। लिटरेचर बि हिकिड़े क़िस्म जो आर्ट आहे, जीअं म्यूज़िक आहे, डांस आहे, पेंटिंग आहे, स्कल्पचर आहे वग़ैरह, जेके जिन जो मक़सदु हूंदो आहे एस्थेटिक प्लेयर। जेके लिटरेचर बि हिकिड़े क़िस्म जो रीडर खे ऐं राइटर खे हिकिड़ी प्लेयर प्रोवाइड करे थो। If we talk about the history of literature, literature emerged in Anglo-Saxon era, which is the first developing and birth period of literature. It is the era in which literature grown and literature emerged out from the writer's mind and spread like air. It was very dark and old era. It is between 1670
or 500 to 1100. English literature is one of the richest literature of the world, being the literature of Great Nation, which, though inhabiting a small island of the west and coast of Europe, has made its mark in the world on account of her spirit of adventure, perseverance, and tenacity. When we study history of English literature from earliest to modern times, we find that it has passed through the certain definite phases, each having marked characteristics. These phases may be termed as ages or periods. हिन में इहो ॿुधाए थो त जॾहिं असीं लिटरेचर खे स्टडी कंदा आहियूं त उनखे कुझु मख़सूस जेके फेज़िस हूंदा आहिनि या स्टेजनि में विरहायो वियो आहे जंहिंखे असीं एजिस या पीरियड्स चवंदा आहियूं. जीअं एज ऑफ चौसर, एज ऑफ शेक्सपियर, एज ऑफ मिल्टन, एज ऑफ ड्राइडन एंड एज ऑफ पोप, जीअं अञा एज ऑफ जॉनसन. सो इहे इन्हनि खे पाण एजिस चवंदासीं. इहे माना हिकिड़ा मख़सूस हिकु फेज़िस हूंदा आहिनि जंहिंमें लिटरेचर डिफरेंट फेज़िस में समायल हूंदो आहे, जंहिंमें डिफरेंट राइटर अची था वञनि. इन्हनि में हर पीरियड में या हर एज में तमामु यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हूंदा आहिनि, कुझु डिफरेंट हूंदा आहिनि, कुझु कॉमन कैरेक्टरिस्टिक या सिमिलर क्वालिटीज़ बि हूंदियूं आहिनि. Now turn to why we do study literature. There are some reasons and benefits of literature. That's why we read literature. Reading literature sharpens language ability. Reading literature helps in critical analyzing and critical reading as well as critical thinking. It provides wider scope to think on logical basis. Reading literature increases empathy, humanity, and sympathy. Because literature is based on the human relations related to society and their relation between people to people or person to person. Literature always tries to improve the relation between society and society, people and people. That's why it is the most humble and most simple subject of the world, like other IR and social relations, etc. Literature provides meaning to a life, how to spend a life, and perform a unique way, a route to our anxious life, and gives a proper way to run on. Through literature, we get entertainment, knowledge, and get more information. Literature reduces our tensions, depressions, and make us fun. It all about human. Literature is based upon women's life, women past activities, and their current behavior. So it was all about literature, history, and introduction of literature. What is literature? So it is enough for today. Inshallah, we will discuss